तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई वाशिंगटन डीसी में, जिसको प्रेजाइड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। और इस मीटिंग में यूरोपियन यूनियन के हाई प्रोफाइल लीडर्स जिन लोगों ने इसमें ज्वाइन किया। और ये आपको पता है कि ये फॉलोअप मीटिंग थी अलास्का समिट की। अलास्का समिट जो आपको पता है कि व्लादिमीर पुतिन और यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के दरमियान हुई। और इसका जो मेन क्रक्स था अलास्का मीटिंग का, वो यही था कि जो जंग चल रही है बिटवीन द यूक्रेन एंड द रशिया, देयर हैज़ टू बी ए ब्रेक थ्रू। और ये भी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इसको बहुत पुश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने कई मरतबा ये बोला है कि if he was the president of the United States when the war broke out in 2022, he would never have allowed this war to be broken down between two countries. और आपको ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प rigorously push कर रहे हैं for the Nobel Peace Prize, and you also know that he has to break some critical deals, the conflicts that are existing at the moment in the world. उसको सीज फायर उनको एंड करना है, then that ultimately will qualify him or justify him to be what you call as somehow to be qualified for the Nobel Peace Prize. लेकिन जैसे आपको पता है कि गाज़ा के अंदर जो एक टेरिबल सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ चलती ही नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प की। तो वहाँ पर मनमानी हो रही है और लोगों का कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड मैसेकर्स हो रहे हैं डेली। वहाँ जो ना इसराइल इतनी ऑनस्लॉट कर रहा है, इतने बच्चों को मारा है, लड़कियों को, बच्चियों को, हंगर, स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन से अभी बच्चे वहाँ मर रहे हैं। तो उसके अंदर उनकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो यूक्रेन और रशिया का है, इसके बारे में इतना रिगोरस एंगेजमेंट्स हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, और डोनाल्ड ट्रम्प ने कितना एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया, उतना रोल अपना प्ले कर रहा है। सो एज इफ ही इज़ वेरी मच सिवियरली सीरियस अबाउट bringing an end to this conflict, engaging both the countries at the high profile meetings. अच्छा, इसके अंदर आपको पता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, या यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, जर्मनी के चांसलर थे, इटाली की प्राइम मिनिस्टर थी, यूएसए का प्रेसिडेंट जो कि वाशिंगटन डीसी में इसको प्रेजाइड कर रहा था। और इसके जो और भी बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल शख्सियत इसमें थी, और जो मेन इस पर शख्सियत थी वो थी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिसने जो कि यूक्रेन से आए थे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको पता है कि अलास्का समिट के बाद जो फ़ोन कॉल किया था डोनाल्ड ट्रम्प ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, एंड ही हैज़ कॉल्ड हिम दैट यू हैव टू एक्टिवली नाउ एंगेज इन दिस process of resolving this conflict between Russia and your country, because you are losing a lot of people on a daily basis. हज़ारों में जो है लोग मर रहे हैं on a weekly basis. So there has to be put an end. जैसे आपको ये भी पता है, डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट टाइम पे जब इनके दरमियान सख्त कला यू नो तल कलामी हुई थी, when he was Zelensky was last time in the White House, and there was a very hot exchange of the words between the United States के जो वाइस प्रेसिडेंट JD Vance, and then the Donald Trump, and then between Zelensky. और आपको ये भी पता है कि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको कहा था कि अगर हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स आपको नहीं देते, मिलिट्री सपोर्ट नहीं देते, फाइनेंशियल और डिफेंस सपोर्ट नहीं देते, दिस वॉर वुड हैव प्रॉब्ली एंड इन अ वीक। और जेडी वैंस को इन्होंने ये भी कहा कि यू आर अ थैंकलेस लीडर और द प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन एक्सटेंडिंग यू all types of support, whether the monetary or the defense support or the equipment, military equipment support, but still you are a thankless leader. लेकिन आज की हम देखें तो ट्यून में बहुत ही humbleness आई थी व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के, because knowing the fact that Russia is gone all out and the Russia has the upper hand in this war. और इनको क्लियरली ये कम्युनिकेट किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने कि अगर आप वो हरदर्मी, दैट कन्फ्रंटेशन, दैट ईगोइज्म वो दिखाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट rid from this war, and then you will have to let your people die on a daily basis and let your soldiers die, and we are no more in a position to extend you millions and billions of dollars that we have given in the previous administration of जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन थी। क्योंकि यूएसए के पास अब अपने फाइनेंशियल क्राइसिस, द यूनाइटेड स्टेट्स इज फेसिंग critical, after imposing these duties or the customs और द टेरिफ्स, उनके एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स जो है उस पर बहुत बड़ा अभी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से यूएसए इज़ फेसिंग इट्स ओन क्रिटिकल वर्टिकल इश्यूज। वी नीड टू गो बैक टू 2014 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट के क्रक्स को,
मैंने उनको ब्रेक किया है 7 बड़े बड़े पॉइंट्स में, ताकि हमें एक अंडरलाइंग आइडिया समझ आ जाए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ब्रेक हुआ था बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, इसकी बेसिक क्या थी। सबसे पहले जो पॉइंट था कि जो रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया को थ्रू ए हाईली डिस्प्यूटेड रेफरेंडम, so that's one of the basics of the what you call is the conflict that ultimately broke down between two countries. हालांकि 2014 में इस कॉन्फ्लिक्ट को ऑफिशियली ऑनस्लॉट जो है स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इट वाज समथिंग दैट गेव और पेव द वे फॉर द कॉन्फ्लिक्ट टू हैपन। पॉइंट नंबर 2 में अप्रैल में 2014 में रशिया ने बैक किया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या मिलिटेंट्स को कोवर्टली, जो दो मेजर सिटीज़ यूक्रेन की है, जिसमें डोनबास आता है और जिसमें लूसानिक आता है। तो वहाँ पर जो भी सेपरेटिस्ट को उनको रशिया ने मॉरल डिप्लोमेटिक पर्टिकुलर जो कैसे मिलिट्री सपोर्ट, ammunitions, everything, they provide them so that they can what you call start the kind of confrontation against the Ukraine as such. पॉइंट नंबर 3 में हुआ कि रशिया ने कोवर्टली सपोर्ट किया इन ऑर्गेनाइजेशंस को और इन्हें उनको फुल एक स्केल पे मिलिट्री सपोर्ट दिया, जिसके अंदर जो है टैंक्स थी, आर्टिलरी थी और बड़े बड़े जो है ना जो भी साजो सामान था उनको प्रोवाइड किया, ताकि वो एक फुल स्केल वॉर जो है ना स्टार्ट करें। और ये आपको पता है कि ये दो मेजर सिटीज़ हैं यूक्रेन की, और वहाँ पर जब रशिया ने उनको एक फुल बैकअप किया, जिसके अंदर आर्टिलरीज हैं, जिसके पास आपके पास ट्रूफ्स हैं या आपके पास टैंक्स हैं, ताकि यूक्रेन की किसी भी ऐसे अटैम्प्ट को प्रिवेंट किया जाए जिसमें यूक्रेन इन सिटीज़ पे अपना कब्जा जमा सके। ये थर्ड पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट था, उन्होंने इसको डिक्लेयर किया इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स था, इन्होंने जज किया इन दोनों स्टेट्स को, जो डोनबास पीपल्स रिपब्लिक थी और लुहांसिक पीपल। तो उन्होंने कहा कि दिस इज बीन कंट्रोल डायरेक्टली बाय द रशियन फेडरेशन। पॉइंट नंबर 6 में क्या हुआ कि रशिया और यूक्रेन ने साइन किया एक एग्रीमेंट जिसका नाम था मिन्स्क 2 एग्रीमेंट, जिसके अंदर टर्म्स कंडीशंस रखी गई थी, जिसके अंदर जो भी क्लॉज रखे गए थे, बट दैट एग्रीमेंट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। एंड उसमें सीज फायर ब्रोक डाउन हुआ, बहुत सारी जो भी वायलेशंस हुई दोनों तरफ से। तो दैट वाज समथिंग दैट जिसने एक स्पार्क जो ना इस कॉन्फ्लिक्ट को दी, और जिसने एक काइंड ऑफ एक कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ता गया। अच्छा, 2021 में क्या होता है? 2021 में देयर वाज ए मैसिव रशियन मिलिट्री बिल्डअप। रशिया ने एक मैसिव मिलिट्री बिल्डअप किया नियर द यूक्रेन बॉर्डर्स, जिसमें बेलारूस का जो बॉर्डर है उस पर भी मैसिवली मिलिट्री बिल्डअप हुआ 2021 में, जो कि रशिया ने किया। उसके बाद पुतिन ने फुली जो है ना एनेक्सेशन की जो एक्सपेंशन की जो व्यूज़ है, उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को नहीं मानते, एंड देयर हैज़ टू बी एक्सपेंशन व्हेन इट कम्स टू द डोनबास एंड द ल्यूसानिक सिटीज़। तो हम इनको एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो रशियन कल्चर के लोग हैं, जो रशियन की लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो रशिया से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे आपको पता है कि यूक्रेन जो था ये सोवियत यूनियन का एक पार्ट हुआ करता था किसी टाइम पे, बिफोर देयर वाज अ ब्रेक ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। तो रशिया ये क्लेम करा है कि इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे टेरिटरीज, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे ट्रेडिशन जो हैं दैट दे स्टिल बिलोंग टू रशिया एंड दे वांट टू बी द पार्ट्स ऑफ द रशिया। दैट्स द रीजन व्हाई पुतिन हैज़ बीन विविंग एंड ही हैज़ बीन वॉइसिंग द एक्सपेनिशनिस्ट व्यूज, और जिसके अंदर उसने बिल्डअप किया ये सारा जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए, आर्टिलरीज दिए, टैंक्स दिए, जहाँ पर जो भी ग्रुप्स उनके अंदर उन सिटीज़ के अंदर थे कि आप उठ जाओ, रिवोल्ट करो और यूक्रेन से आप जो है आज़ादी ले लो। उसके बाद होता क्या है 2022 में, रशिया रिकॉग्नाइज करता है इन दोनों सिटीज़ को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसमें डोनबास पीपल्स रिपब्लिक आता है और जिसके अंदर LPR आता है एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन को कहा गया कि हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये आज़ाद अब स्टेट्स हैं। उसके बाद रशियन ट्रूप जो है उन्होंने सराउंड किया पूरे यूक्रेन को, और 24 ऑफ फरवरी 2022 में पुतिन ने एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया, ए फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। अच्छा, जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर थे, तो रशिया की डिमांड्स थी बेसिकली कि नेटो जो है यूक्रेन मस्ट नॉट बिकम the part of the NATO's military alliance at all, because if at all there is any conflict, which was ultimately there because the borders of the Russia and the Ukraine are there,
There's always been the kind of hot kind of kind of confrontation between both the sides. तो रशिया ने इनको warn किया था that Ukraine should be barred in all the circumstances not to become the permanent member of the NATO's military alliance. लेकिन European Union push कर रहे थे and there was continuous efforts from the Ukrainian side that some of they should get this membership and they should become the part of the European Union military alliance, so that if at all the Russia comes and that attacks the Ukraine, the militaries of all the countries who are the part in the NATO, they will simultaneously fight against the Russian Federation. तो जिसकी वजह से ये जो जंग तब से 2022 से जब से ये फुल स्केल वॉर लॉन्च किया गया तब से अब तक चल रही है, जिसके अंदर more than 1 million peoples, which includes the troops from both the sides, the Russian troops and the Ukrainian troops, along the civilian casualties, are been reported कि 1 million यानी 10 लाख से ज़्यादा लोग जो इसमें अपनी जानें गंवा गए हैं। और ये वर्ल्ड वॉर थर्ड के बाद या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सबसे बड़ी ज़्यादा बहुत बड़ी जंग मानी जाती है जिसमें इतनी रिपोर्ट या इतनी मैग्नीट्यूड पे कैजुअलिटीज़ को रिपोर्ट किया गया। तो इसके अंदर अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है जो फाइनेंशियली भी ड्रेन हो रहे हैं, या यूरोपियन यूनियन जो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी, मिलिट्री सपोर्ट कर रही थी, एंड दे आर ऑल्सो फीलिंग दैट एज इफ दे आर बीन ड्रेन्ड एंड दे नाउ नीड टू स्टॉप दिस वॉर by any circumstances, because this war is costing to the world, to United States, to European Union, and to the Ukraine, and to Russia. Everybody is becoming the victim of this war. So everybody wants to get a ceasefire break. But as a matter of fact, as we did explain, that this is a very complex issue. It has a very complexities, considering from 2014 how this Crimea was basically being annexed with Russia as a result of the disputed referendum, and many more things that happened post 2014. इसमें बहुत सारी technicalities हैं, and hopefully that both the parties are going to understand and try to support each other in resolving these technicalities. And Donald Trump is calling himself to be the maker or the breaker of all the deals, the mother of all the deals. He's saying that any kind of deal in the world he's going to break. And as you know, that the confrontation that took place, the escalation that took place between Pakistan and India, was also claimed by Donald Trump that he was a primary party who helped to bring a deal or the ceasefire between two countries. Otherwise, it was a nuclear flashpoint. There was a possibility of a nuclear war when the millions and billions of people would have been ultimately died. We're going to continue to talk on these international issues, and I have the the YouTube channel which you can consider to subscribe. Hopefully you're going to subscribe, because we will be trying to understand the nature, the complex nature of these issues or these international disputes which are prevailing and affecting everybody's life, the cost of living, the higher inflations, and the people who are dying every way. So we have to be careful about this, and we have to plan accordingly, and we have to think accordingly, obviously, so that we are prepared against all these kind of things which affect us all the way. See you next time. Time to conflict.